students. Today we will start the next paper for chemistry 12th class, Punjab School Education Board, pre-board and final examination. So start करते हैं from first section A. First question, 18 gram of glucose is added to the 178.2 gram of water. The paper pressure of water for this aqueous solution. So इस न्यूमेरिकल ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ C option, that is 752.4. Next question, which of the following pair form nearly ideal solution? Ideal solution which having the same type of interaction and which were rolls law. First option acetone and benzene, second acetic acid and pyridine, third hexane and heptane, fourth ethanol and cyclohexane. So correct answer is hexane and heptane. Form ideal solution. Which of the following is independent upon temperature? That is the first option, molarity, normality, formality and mole fraction. So correct answer is a mole fraction. ठीक है. If a conductivity and a conductance of a solution are same, then cell constant is equal to, ठीक है, K and C and L over A. सो अगर वैल्यू 1 हो जाएगी तो L over A भी 1 हो जाएगा, सेल कॉन्स्टेंट भी वैल्यू 1 हो जाएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, दैट इज ए ammonium hydroxide, that is a ammonium chloride plus sodium hydroxide minus NaCl, that will give the B option, that is a ammonium hydroxide की conductivity, क्योंकि Cl ਤੇ Na कैंसिल हो जाएंगे साढ़े कोल ते ammonium ते OH साढ़े को ऐड हो जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट दैट इज ए rate law for the reaction R is equal to ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ K into A ਤੇ B. अगर concentration of reactant B is double, अगर डबल करता जाए तो K ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, इट मीन ओवरऑल रेट भी की हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज B ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए फर्स्ट रिएक्शन इज टू 99% कंप्लीट एंड कंपेयर टू टाइम टेकन फॉर रिएक्शन टू 90% कंप्लीट. सो दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? देयर इज नो चेंज टाइम and time taken is double and time taken is triple, the reaction is instantaneous. So correct answer is time taken is double. ठीक है. नेक्स्ट है द रेट यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट डायरेक्शन. अगर सानू याद है nth ऑर्डर ਦੀ n वैल्यू उत्थे कंसनट्रेशन ਦੀ पावर 1 माइनस n ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਨਵਰਸ ਹੈ n वैल्यू ਭਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ n वैल्यू कितनी फर्स्ट ऑर्डर 1 पुट करांगे तो साढ़े को आंसर आ जाएगा सेकंड इनवर्स. ठीक है जी. So next, that is a coordination number of cobalt in CO, K, CO, carbonyl 4. So that is a +1 for potassium, 1 plus X and carbonyl 0, X will become equal to -1. Next, among the following which has square planar geometry, that is a first AgNS 3 twice Cl Cl4 nickel cyanide 4 2 negative. So correct answer is C option, nickel cyanide 4 2 negative. Next, what is the oxidation state of iron in K3 FeCN6, that is a 3 minus 6 3. So oxidation state is +3. ठीक है. The correct name of K2 PdCl4, that is a ऑक्सीजन स्टेट साढ़े को आ रही है 2 आ रही है तो 2 वाले 4 2 है. सो इसका नाम आ जाएगा पोटाशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट, टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट 2. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ठीक है जी. सो नेक्स्ट वन इज क्लोराइडो पैलेडेट, आ वाला आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगी टेट्रा क्लोराइडो. ठीक है जी. नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोमेरिक, दैट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिथाइलामाइन, मिथेनॉल, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब तो ज़्यादा ਉੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕੋ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਨੋਲ. ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਨੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ.
Next, which of the following is most acidic in nature? Acidic, that is a phenol, alcohol, acetic acid and chloroacetic acid. So chloroacetic acid is more stronger acid. ठीक है. Which among the following undergo Cannizzaro reaction? Cannizzaro reaction occur करते जिन्हों को अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. So acetone having alpha hydrogen, formaldehyde no alpha hydrogen, acetaldehyde benzyl alcohol. So correct answer is formaldehyde is the correct answer. ठीक है. Next, that is in iodoform reaction, the formula of iodoform, that is CH3I, CHI3, CH2I2, and the correct answer is CHI3, that is iodoform formula. ठीक है. Next, hydrogenation palladium barium sulfate is used in which reaction? Clemson Woods fatigue Rosenmund. This is a Rosenmund reduction reaction ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਐਸੀਟੈਲਡਹਾਈਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ. ਫਸਟ ਹੈ fuel cell is used in space polo program. That is also true statement. Primary mine are more basic than secondary mine. This is a false statement क्योंकि secondary mine ज़्यादा basic होता है. Gabriel Thalhamide synthesis is used to preparation of primary mine. That is also true statement. Aldehyde are more reactive than ketone. That is a true statement. Ethyl diamine is bidentate ligand. That is also a true statement. ठीक है जी. Next, that is a paragraph based question and you can write. Next, a 2 marks carrying question and 3 marks carrying question. ठीक है. Similarly, next 5 marks carrying question D part है साढ़े को. ठीक है, ये सारा आप सोल्व करांगे. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.00103 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 27 डिग्री. कैलकुलेट द वाटर फैक्टर आई पता करेंगे बाय यूजिंग पाई इज इक्वल टू ICRT एंड आई तो फॉर्मूले तो इतों कैलकुलेट करेंगे. 2.96 वैल्यू साढ़े को आ रही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है when 0.6 gram of urea dissolve in 100 gram of water, what is the boiling point of the solution at KB ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ and normal boiling point ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. KB ਵੈल्यੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, WB ਦਿੱਤਾ, WA ਦਿੱਤਾ, MB ਦਿੱਤੀ ਵੈल्यू. ठीक है, सारे पुट करांगे, डेल्टा TB साढ़े को निकल जाऊगा. ठीक है जी. नेक्स्ट है साढ़े को डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन which obey Rolle's law, non-ideal solution which does not obey Rolle's law. Ideal solution, the interaction between the component are similar to pure component, interaction are different. Delta V mixing 0, delta H mixing 0, delta V mixing not equal to 0, delta H mixing not equal to 0. ठीक है. That obey Rolle's law, do not obey Rolle's law. ठीक है जी, यही आपको क्वेश्चन पहले भी किया सी. नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, दैट इज ascorbic acid. ठीक है जी. नेक्स्ट है साढ़े को वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी, क्योंकि विटामिन सी की है वाटर सोलुबल विटामिन है विच कैन बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट वैल्यू देती है, हाफ लाइफ पीरियड पता करांगे. तो फॉर्मूला की होंगे टी हाफ इक्वल टू 0.693 ओवर के, पुट करांगे वैल्यू एंड सॉल्व इट. ठीक है. नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोज thionyl chloride to half life, half of its initial amount is 60 minute, T half ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. सो इन सेकेंड लिख लवांगे एंड के रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करांगे 0.693 over T half. We will get the answer 1.925 multiplied 10 to the minus 4 second inverse. Next, diethyl ether is completely soluble in water, but diethyl ether is soluble in water to smaller extent. ठीक है. डाई मिथाइल ਤੇ डाई इथाइल. ठीक है. डाई मिथाइल ਦੇ ਵਿੱਚ RCH3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ डाई इथाइल ਦੇ ਵਿੱਚ CH3 ਤੇ CH2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗੇ. R ਮੈਂਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਪਾਰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ. ਹਾਈਡਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ R ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਹੈ. R ਮੈਂਬਰ ज़्यादा, नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, सोलबिलिटी घट जाएगी. Solubility of ether in water, that is due to hydrogen bonding. However, the size of a hydrophobic part R increases solubility of ether in water decreases. ठीक है जी, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन. नेक्स्ट अगर गल की जाए प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक दैन सेकेंडरी अल्कोहल.
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਔਨ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ OH ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਮੈਂਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ OH ਬੌਂਡ ਤੇ ਬੌਂਡ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤਾਂ OH ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਸਿਡਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਆਰ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। next question is why chloroacidic acid is stronger acid than acetic acid। अगर देखते हैं chloroacidic acid that is a electron withdrawing group है that will increase ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈਣਗੇ, OH ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵੇਗਾ, OH ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਕਰ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਲੋਰੋਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। बहुत ही प्यारा डिस्टिंग्विश मेथड है। एसिटोफिनोन दैट विल गिव द येलो VPT एंड विद एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आइडोफोम दैट इज द आइडोफोम टेस्ट के नाल CH3CO ग्रुप ये को प्रेजेंट है, इस करके आइडोफोम टेस्ट देगा। ठीक है, CHI3 येलो VPT बनते पे। ठीक है, बेंजोफिनोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। नेक्स्ट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर that will form a phenol nitrogen plus HCl with HCl cuprous chloride that will form a chlorobenzene। ठीक है, very simple method। next है benzene diazonium chloride further react with potassium iodide या cuprous bromide aniline है, cuprous bromide है, copper cyanide है, Ki ਦੇ ਨਾਲ that will form a iodobenzene। phenol ਦੇ ਨਾਲ that is a parahydroxyazobenzene। aniline ਦੇ ਨਾਲ that will form a coupling reaction para amino azobenzene formation हो जाएगा। ठीक है, these are important naming reactions। next है cuprous bromide HBr ਦੇ ਨਾਲ ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाऊगा, cuprous cyanide ਦੇ ਨਾਲ साइनो प्रोडक्ट बन जाऊगा, साइनोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। next है ट्रांजिशन मेटल शो कलर्ड आयंस ड्यू टू द DD ट्रांजिशन शो करनगे। ठीक है, कि D ऑर्बिटल ਹੁੰਦੇ ਆ फर्स्ट ਡੀਜਨरेट ऑर्बिटल ਹੁੰਦੇ ਆ जिस तरह लिगेंड अप्रोच करते that will separate into two energy level। ठीक है, T2G and EG एनर्जी लेवल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी भी कह देंगे ਆਪਾਂ। फर्दर के अंदर जिस तरह एनर्जी गेन करते हैं तो इलैक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट तो ऑक्साइडेड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ मूव कर जाते हैं, तो सो ऑक्साइडेड स्टेट बिकम अनस्टेबल then fall into the visible ground state। सो ग्राउंड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨੀ ਲੋਸ ਕਰਨਗੇ, that will show कलर, वो कलर शो करते हैं। ठीक है जी, so this is the transition element show colored ions। next that is a isomerism ਦੇ isomerism ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ example that is a linkage isomer, that type of isomer shown by coordination compound having the ambidextrous ligand। ठीक है, linkage ਦੀ linking property different ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ CONH3 5NO2 N ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ONO ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੇਮ ਹੈ NO2 ONO ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਿਗੈਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਲਿੰਕੇਜ ਆਈਸੋਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਈਸੋਮਰ ਅਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਇੰਟਰਚੇਂਜਿੰਗ ਆਫ ਲਿਗੈਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ cationic and anionic complex of different metal ion present in the complex। for example Cr ਦੇ ਨਾਲ क्रोमियम ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਨਾਈਡ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਨਾਲ ਸਾਇਨਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਨ ਬਣਨਗੇ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਇਨਰ ਤੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SO4 ਤੇ Br ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ Br ਇਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ SO4 ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ,
These type of isomer are called as a ionization isomer, which will give the different ions. ठीक है. Next, that is the again numerical. Calculate the EMF of the following cell. ਸੈੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ E0 ਸੈੱਲ ਦੀ. ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਪਹਿਲੇ ਐਟ ਐਨੋਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਫ ਸੈਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ. कैथोड reduction half cell reaction, overall cell reaction. Nernst equation can be written as E cell is equal to E naught cell minus 0.059 over n log product over reactant. E naught cell become equal to 0.44 volt. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ concentration, so we will get the answer. So ਇਹ ਸੀ Nernst equation based numerical. Next are the resistance of 0.5 normal solution of electrolyte in a conductivity cell is found to be 25 ohm. Calculate the equivalent conductivity of the solution of which of the following cell 1.6 cm apart and having area is 3.2 cm square. R ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, L ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, A ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ. conductivity K ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, C multiple L over A. equivalent conductivity equal to K multiple 1000 over N. सो इस तरह सॉल्व करांगे तो 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स वैल्यू दी आ जाएगी. ठीक है जी. नेक्स्ट है डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड फॉर्मेशन फर्दर एसिड देंगे. सेकेंडरी अल्कोहल दी ऑक्सीडेशन दैट विल गिव ए कीटोन एंड फर्दर एसिटिक एसिड. ठीक है जी. And similarly oxidation of tertiary alcohol that will give the alkene and further that is the ketone, and after that again move oxidation will give the carbonic acid and water. ठीक है, upon the drastic condition. ठीक है, drastic condition है, otherwise फर्स्ट स्टेप ते ही ब्रेक कर देगी. So this is also important oxidation reaction by using KMnO4. ठीक है, oxidizing agent. Next question, that is the oxidation of primary, secondary, tertiary alcohol over red hot copper. इनल करांगे that will form a that is a primary alcohol copper 573 Kelvin after removal of a hydrogen that will give a aldehyde, and copper 573 secondary alcohol will give a ketone and tertiary will give the alkene. ठीक है जी. This is again over the red hot copper अगर हीटिंग करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन साढ़े को नंबरिकल टी हाफ दिता है सानू बाय यूजिंग रिलेशनशिप के इक्वल 0.693 और टी हाफ वी विल गेट के वैल्यू, एंड के वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे सो वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम फॉर 90% completion. 90 by using the equation t equal to 2.303 over k log a naught over a हो जाएगा 100 minus 90 that is a 10 हो जाएगा. so solve करेंगे numerical that will give the answer 146.7 minute. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाएगा how does benzene diazonium chloride react with water and aqueous copperous chloride. अगर वाटर ना रिएक्ट करांगे तो फिनोल फॉर्मेशन है. copperous chloride ਨਾਲ क्लोरोबेंजीन बनता है साढ़े कोल. ठीक है जी. राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट N-1. ठीक है, D1 to 10 and NS1 to 2. ठीक है. Why transition metal have tendency to form complex? Because of presence of N-1 d orbital, they can accept one or more electron pair to form the ligand, and high charge density of transition metal atom. ठीक है, high ionic charge, small size of metal ion, they have tendency to form complex compound. Next question, why transition metal form alloy with the transition metal easily. ठीक है, the transition metal have tendency to form alloy can be explained on the atomic size. The atomic size of transition metal are very similar, hence the crystal lattice atom of one metal can easily replace with the another metal atom. ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज बन जाते हैं एक मैटल के दूसरे मैटल के नाल कंबीनेशन ईजिली हो जाता है क्योंकि साइज सिमिलर है एंड हैंस दे फॉर्म अलॉयज. फॉर एग्जांपल स्टील आयरन अलॉय विद द कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट दोज एलिमेंट हुज एटम और आयन कंटेन द पार्शली फिल्ड
d orbitals, ठीक है जी। नेक्स्ट है why are manganese 2 positive compound are more stable than Fe2 positive compound toward oxidation state। कहना मैगनीज ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 3d5 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਮੈਗनीज 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ which is a half filled electronic configuration, ठीक है। and and the electronic configuration of iron 2 positive है, it can lose one electron easily to achieve the stable noble gas configuration 3d5 है, ठीक है। आयरन मैगनीज 2 पॉजिटिव 3d5 बन जाती है एंड आयरन 3 पॉजिटिव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3d आयरन 2 पॉजिटिव है ਸਾਡੇ ਕੋਲ दैट इज ए 3d6 बन जाती है, ठीक है जी। so that will show the different oxidation state। अगर नेक्स्ट देखते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH leads to formation of alcohol but in presence of alcoholic KOH alkene are major product, ठीक है जी। सो ਜਦੋਂ alcohol alkyl halide ਨੂੰ treat ਕਰਦੇ KOH aqueous ਨਾਲ that will form an alcohol, it will KOH is almost completely ionized to give OH negative ion, these being strong nucleophilic result in the substitution reaction on alkyl chloride to form alcohol. Moreover, aqueous solution of OH negative ion being highly hydrogenated, solvated, and this hydration reduce the basic character of OH negative ion and which therefore fails to abstract a hydrogen from the beta carbon. So form alkyl halide to form an alkene बना ਦਿੰਦੇ हैं, ठीक है। On the other hand अगर अल्कोहलिक QH देखते हैं तो उत्थे अल्कोक्साइड आयन है विच इज़ मोर बेसिक है, ये नाल दी कार्बन तो हाइड्रोजन भी एक्सट्रैक्ट कर लैणगे तो Cl भी एक्सट्रैक्ट कर लैणगे तो फॉर्मेशन अल्कीन हो जाएगी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਐਕੋਸ ਹੈਗੇ डायरेक्टली ਕੀ ਬਣੇਗਾ अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन। हैलोअरीन अल्केन की गल की जाए जिस sp3 है, हैलोअरीन की sp2 हाइब्रिडेशन है। it readily undergo nucleophilic substitution reaction, it undergo electrophilic substitution reaction। the halogen atom in haloalkane is very reactive, it is less reactive, these are lighter than water haloalkane, these are heavier than water, soluble in water and polar in nature, it is insoluble in water and soluble in organic solvent, ठीक है जी। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फ्रेन। फ्रेन आर यूज इन रेफ्रिजरेंट है, AC एयर कंडीशन यूज़ करते हैं। दे हैव ऑल्सो बीन यूज एक्सटेंसिवली एज ए प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल एंड फॉर्म्स टू सैपरेट आउट डिओड्रेंट वगैरह जो क्लीनर या स्प्रे के भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोमियम तो मैगनीज। क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है। सो इसका कारण की है कि क्रोमियम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं 3d5 4s1, ठीक है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव 3d4 बन जाता पे, मैगनीज 3d5 4s2, मैगनीज 3 पॉजिटिव दैट इज 3d4 बन जाता है। कॉपर कैन एग्जिस्ट 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैगनीज कैन एग्जिस्ट +2 3 4 5 6। कॉपर 2 पॉजिटिव एक्ट एज reducing agent। reduction agent are those which can undergo oxidation by loss of electron। copper 2 positive can lose electron and exist in 3 4 5 6 oxidation state। manganese 3 positive gain 1 electron, exist in +2 oxidation state, but generally it can lose electron and exist in +4 5 6 oxidation state। so chromium 2 positive can lose electron, exist in D2 and D3 configuration as well as, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन that is a conversion reaction when a methyl chloride reacted in the presence of dry ether with sodium metal, that will follow a Wurtz reaction and formation of alkane, that is a ethane formation। next that is a ethyl chloride reacted with the KOH alcoholic, that will form a alcoholic है, it will form a alkene ethene formation। third that is a n propyl bromide है, treated with KOH aqueous है, that will form a alcohol, that is a propyl alcohol formation हो रही है। next and CH3CH double bond CH2 propene है with HBr है in presence of peroxide, this is also known as the anti-Marconic of rule भी कह देंगे ਆਪਾਂ, that will form a 2 bromo propane formation है। and last one that is a alkylation reaction, Friedel-Crafts alkylation, chlorobenzene treated with methyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, that is a 2 chloro
ਟੋਲੂਇਨ ਔਰ 4 chlorotoluene ਐਜ਼ ਏ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ all the best to all the students and get good marks. Thank you.